Hello everyone. तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट यू नीड टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर, एंड गूगल प्ले स्टोर पे जाके यू नीड टू गो एंड इंस्टॉल अन अकेडमीज लर्निंग ऐप, एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट योर गोल. इन द सेलेक्ट योर गोल कैटेगरी यू नीड टू सेलेक्ट लॉगिन, एंड लॉगिन करने के बाद यू नीड टू सेलेक्ट CSIR UGC नेट. So once you do that, you will be getting access to all the courses from the top educators for free. And if you want to go for more, then you need to go for the plus subscription. The plus subscription is available for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. Well, I would recommend that each one of you go for 12 months to 24 months of subscription, because ये एक आइडियल अमाउंट ऑफ टाइम है जो अवेलेबल है फॉर क्लियरिंग द एग्जाम. So you need to go for the plus subscription. So you can use my referral code HY10 for getting 10% off. So then you need to go and confirm the details. So you need to go and do the apply my code, and if you select the 12 months course, then the cost will be deducted by 10%. You will get 10% flat off. So you need to proceed to the payment, and payment can be done either by debit card or by credit card or by EMI, and these EMI are all no cost EMI. Payment can also be done by net banking. So we have started ultimate course on life science CSIR batch 1, which has started from January the 25th. Myself, Himanshu Yadav sir, Neha Taneja ma'am, Viring Singh sir, Mohammad Salman sir has started the course. So this is how the situation is. So you can join this course. This is the course from the top educators. So these are the courses from top educators. So the top educators offer you the best chances of best guidance and best chances of clearing the exam. So शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा before we start. So तो हम लोग कर रहे थे ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट. सो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस होती है वो डिवाइड होती है इनटू ब्रॉड रीजन्स बाय गैप जीन्स. ऑलराइट, द एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन इज एक्सेस इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड जीन्स बाय ब्रॉड रीजन्स बाय गैप जीन. ऑलराइट, और ये गैप जीन्स फर्स्ट जीन्स होती हैं जो एक्सप्रेस होती हैं अलॉन्ग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंड दे आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. So gap genes are initiated by bicoid gradient in the synfacial blastoderm. So bicoid protein primary activates anterior expression of hunchback, and it acts to help the switch on the other gap gene, that is giant, neutral and NIPS. So mutants of gap gene have large section of the body pattern missing. Just a minute. Yes. So जो म्यूटेंट्स होते हैं गैप जीन के, दे हैव लार्ज सेक्शंस ऑफ द बॉडी पैटर्न मिसिंग. सो गैप जीन प्रोटीन्स आर शॉर्ट लिव्ड and are diffusible. So control of hunchback by bicord can set up the anterior posterior axis. So different gap gene is controlled by different concentration of bicord and hunchback. Also, so hunchback, giant, neutral, NIPS and tailless, these are the gap gene जिनका expression होता है. So anterior posterior axis is divided into broad regions by the gap genes.
So ये है एग्जाम्पल्स ऑफ जीन एक्टिविटी. So there are maternal genes. So जब sequential expression होगा of different set of genes established by the body plan along the anterior posterior axis. So after fertilization क्या होता है कि maternal gene products laid down in the egg, so which is the bicod gene, and bicod mRNA is translated. So we get the positional information, and then there are 4 classes of zygotic genes, namely gap gene, pair rule gene, segment polarity gene, and selector genes. So different gene determine different function. तो सेलेक्टर जीन को हम लोग होम्योटिक जीन भी कहते हैं. So this is the how the positional information is shared. All right. Then bicod protein signals anterior hunchback expression. So this is the hunchback expression in the anterior half of the embryo. So suppression हो जाता है hunchback in the posterior half by nanose protein which produces a gradient running from anterior to posterior. So anterior expression is switched on by high levels of bicod, and then there is increased anterior bicod expression that will result in extending the hunchback gradient towards the posterior half of the embryo. So maternal bicod protein controls the zygotic hunchback expression. So bicod basically directly binds to the hunchback promoter in several places, and maternal gene, that is bicod, it makes the bicod protein and which encodes the zygotic gene expression of the hunchback. Then there is a morphogen. So this is the bicod protein which controls the zygotic hunchback expression.
सो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बाइकॉर्ड प्रोटीन कैसे सिग्नल करती है एंटीरियर हंचबैक एक्सप्रेशन को। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिए, इस कंसेप्ट को आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इस वाले केस में देर इज अ नॉर्मल प्रमोटर, देन द सेकंड केस देर इज अ पार्शियल प्रमोटर, एंड देन देर इज व्हेन द प्रमोटर इज डिलीटेड। सो प्रमोटर के पास बाइकॉर्ड आके बाइंड करेगा, देन लैग दैट जीन विल टर्न ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द हंचबैक जीन। सो हंचबैक का जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल होता है बाय बाइकॉर्ड प्रोटीन। ओके, हंचबैक एक्सप्रेशन इज विजुअलाइज्ड बाय जॉइनिंग द बैक्टीरियल लैग जेड जीन टू द कंट्रोल रीजन ऑफ द ड्रोसोफिला हंचबैक जीन एंड इंसर्टिंग दिस कंस्ट्रक्ट इनटू द फ्लाई जीनोम। तो जो लैग जेड का जीन प्रोडक्ट होगा वहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज यूज करेंगे फॉर स्टेनिंग। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एंटीरियर का एक्सप्रेशन होगा। पार्शियल प्रोमोटर जब भी होगा तो डिक्रीज एक्सप्रेशन होगा, एंड नो प्रोमोटर जब होगा तो देयर विल बी नो एक्सप्रेशन। So from figure 5.16 it is found that the bichord combine the hunchback and can induce many type of gap genes. So there is a neutral gene expression in the wild type. So neutral is activated by combination of bichord and low level of hunchback, but it is repressed by high level of hunchback. This locates neutral expression to the control to the center of the embryo. So this is the concentration of the hunchback protein. Okay, then there are other gap gene where mechanism is there involving threshold for repression and activation of anterior posterior axis.
So in this way, the initial gradients of morphogen can lead to the establishment of regions within the syncytial blastoderm, which themselves lead to the beginning of the segmentation. Alright, ये न्यूट्रल जीन का एक्सप्रेशन है इन द बाइकॉर्ड म्यूटेंट, एंड दिस इज न्यूट्रल जीन एक्सप्रेशन इन द वाइल्ड टाइप. सो मिडिल में इसका कंसंट्रेशन है. सो एंटीरियर में देर इज हाई हंचबैक एंड देन देर इज लो हंचबैक एट द पोस्टीरियर साइड. सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हंचबैक. सो न्यूट्रल का कंसंट्रेशन सो एट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो. ओके, सो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो देन यू कैन आंसर इट. So this is a summary of early expression of zygotic gene. So this is anterior posterior gene, then there is dorsoventral gene. So anterior posterior region में क्या होता है कि बाइकॉर्ड प्रोटीन टर्न ऑन करती हैं हंचबैक को. बाइकॉर्ड और हंचबैक रेगुलेट करते हैं गैप जीन्स को, और गैप जीन के प्रोडक्ट गैप जीन इंट्रैक्शन होता है टू शार्पन द एक्सप्रेशन. So axis is divided into unique domain containing different combinations of transcription factors. Alright, this happens in the anterior posterior axis, and this is the dorsoventral axis. So gradient of intranucleus dorsal protein is there. So ventral activation of twist, signal and decapentaplegic is repressed, and decapentaplegic is expressed dorsally. So there is gradient of decapentaplegic activity that patterns the dorsal region. So dorsoventral axis divide into mesoderm, neuroectoderm, and epidermis and anemocero. So ये होता है dorsoventral region में, ये होता है anterior posterior axis में.
सो ये था एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सोवेंट्रल पैटर्निंग के केस में जो केस बन रहा था हमारा। अब ये टेक्निक है ट्रांसजेनिक ड्रोसोफिला बनाने की। सो पी एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन अकम्प्लिश किया जाता है बाय क्लोनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट cDNA और control region reporter gene, and a marker gene is cloned in the transposable P element. So जो cloned DNA होता है along with the source of transposase वो inject किया जाता है in the pole plasm of the early embryo. So if incorporated into the germline, the progeny of the injected individual that expresses the marker gene can be selected. So these will also carry the transgene. So transgenesis allow the manipulation of developmental process segmentation, whereby pair rule gene activation takes place. All right. So parasegment are the basic module of fly development. So parasegment early embryo में बनता है और segments बनता है late embryo में. So parasegment arise होता है arise first and then each segment is made from the posterior part of one parasegment and the anterior of the next. So parasegment are delimited by periodic expression of pair rule genes. Okay. So transient groove on the embryo surface define the 14 parasegments. So each parasegment is independent developmental unit. So pair rule genes लिमिट करती हैं पैरा सेगमेंट्स को एंड एक्सप्रेस होती हैं 7 ट्रांसवर्स स्ट्राइप्स. So pair rule genes expression determined by the gap gene activity to interpret a series of broad expression pattern to make a repeated series of stripes. So ये वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासेगमेंट एंड
So this is a relationship between the para segments and the segments. So pair rule gene, even the even skipped and then polarity selected gene are the engrailed. So the stripe patterns of activity of pair rule genes in Drosophila embryo before cellularization. So para segment से segment बनते हैं और यहाँ पे pair rule genes act करते हैं. So pair rule genes even skipped are shown in blue and Fusey and Terrazzo are shown so this is the gap gene activity position stripes of pair rule gene expression. So pair rule genes are expressed in alternate para segments. So even skipped defines the odd para segment, and Fusey and Terrazzo define the para segment. So striped expression pattern of the pair rule genes begins just before the cellularization. So it is still a syncytium. So after cellularization, each pair rule gene is restricted to a few cells in 7 stripes. So some of the pair rule genes define the segment boundaries and stripes appear slowly. First Fusey and then later become sharply defined. So even skipped is first expressed at low level in all nuclei, but then redefines into stripes. So this is how each stripe is independently specified by different gap gene product regulated. Alright. So bichord and hunchback activate even skipped genes, and gain and neutral repress the bichord and hunchback gene. Alright.
So thank you guys. This is all what we can do till now, and we'll be